बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम to all my dearest students. Today is Monday and the date is 12th April 2021. Dear students, are you ready for today's diary task? Yes? Okay, let's start from first subject. उर्दू अलिफ, जागो नज़्म, मश्क मुकम्मल, लर्न प्लस प्रैक्टिस। प्यारे बच्चों, आइए किताब के सफ़ा नंबर 18 और 19 से जागो नज़्म की मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 1, जवाब दें। सवाल, चिड़िया जाकर क्या कर रही है? जवाब, चिड़िया जाकर खुदा का जिक्र कर रही है। सवाल, चिड़िया कैसे बोलती है? जवाब, चिड़िया चू चू करके बोलती है। सवाल, कौवा कैसे बोलता है? जवाब, कौवा काएं काएं करके बोलता है। सवाल नंबर 2, हर्फों को जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। जीम, अलिफ, गाफ, वाव, जागो। सीन, अलिफ, रे, बढ़िए, सारे। चे, अलिफ, नून, दाल, चांद। चे, हे, काफ, चहत। सवाल नंबर 3, लफ्ज़ों के हर्फ अलग अलग करें। आदत, ऐन, अलिफ, दाल, ते। फुदक, फे, दाल, काफ। जल्दी, जीम, लाम, दाल, छोटिए। पीछे, पे, छोटिए, छे, बढ़िए। सवाल नंबर 4, दिए हुए लफ्ज़ के साथ उस जैसी आवाज़ वाला लफ्ज़ नज़्म में से चुनकर लिखें। प्यारे, तारे। सितारे, सारे। चहक, फुदक। काएं, सदाएं। सब बच्चे जल्दी से सफ़ा नंबर 19 पर आ जाएं। आइए सरगर्मी हल करते हैं। जिन लफ्ज़ों का एक दूसरे से ताल्लुक़ है उन्हें आपस में मिलाएं। चिड़िया भी अब जाग पड़ी है। जिक्र खुदा का करने लगी है। चूं चूं करके फुदक रही है। यारों को देता है सदाएं। जल्दी सोकर जल्दी उठो। सब बच्चे आज इस मुकम्मल मश्क को ज़ुबानी याद करने के बाद इसकी रफ कॉपी पर मश्क भी करेंगे। उर्दू बे, मज़मून, सूरज, मुकम्मल, लर्न प्लस प्रैक्टिस। प्यारे बच्चों, आइए किताब के सफ़ा नंबर 55 से मज़मून सूरज पढ़ते हैं। सूरज अल्लाह ताला की एक नेमत है। सूरज से रोशनी और हरारत हासिल होती है। सूरज मशरिक़ से निकलता और मगरिब में गुरूब होता है। सूरज की रोशनी से फल और सब्जियां पकती हैं। अगर सूरज ना हो तो दुनिया में हर तरफ अंधेरा छा जाए। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने सूरज जैसी नेमत दी। सब बच्चे मज़मून को अच्छी तरह ज़ुबानी याद करेंगे और रफ कॉपी पर ज़ुबानी लिखने की भी मश्क करेंगे। नाउ कम टू द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्ट। यूनिट 6, द जर्नीज टू रेडियो, रीडिंग प्लस वर्ड सिनोनिम plus workbook question number 1 practice. Students, quickly open your textbooks at page number 32. Let's do the reading with synonym. Happy families. The Jonas family is in the park today. The synonym of family is household. Family, household. The sun is shining and the birds are singing. The synonym of shining is bright. Shining, bright. It is a beautiful day. The synonym of beautiful is attractive. Beautiful, attractive. Mr. Jonas is reading the newspaper. Mrs. Jonas is listening to the radio. Let's do again reading with fluency. The Jonas family is in the park today. The sun is shining and the birds are singing. It is a beautiful day. Mr. Jonas is reading the newspaper. Mrs. Jonas is listening to the radio. Students, you will do the reading of today's lesson at least thrice to improve your reading power. Now come to the workbook. Open it from page number 22. Today, we will solve the question number 1. Before solving question number 1, I will tell you about capitalization. Dear students, our sentence begins with a capital letter.
Proper names always begin with a capital letter. Titles, for example, Mr., Miss, Mrs., Miss and Doctor always begin with a capital letter. The word I is always a capital letter when used as a pronoun. Got it, students? Now solve the question number 1. Rewrite the sentences. Use capital letters where necessary. Also end each sentence with a full stop. Number 1. The Jonas family is in the park. Students, capitalize the first letter of the and Jonas. Put a full stop at the end of the sentence. Number 2. Mr. Jonas is reading the newspaper. Capitalize the first letter of Mr. and Jonas and put a full stop at the end of the sentence. Number 3. Mr. Jonas is sitting on a mat. Students, capitalize the first letter of Mr. and Jonas and put a full stop at the end of the sentence. Number 4. Patty Jonas is reading. Capitalize the first letter of Patty and Jonas and put a full stop at the end of the sentence. Number 5. Mr. Chen is digging a hole. Students, capitalize the first letter of Mr. and Chen and put a full stop at the end of this sentence. Number 6. Emily and Jason Chen are playing with their pet. Students, capitalize the first letter of Emily, Jason Chen and put a full stop at the end of this sentence. Number 7. Today I have read 2 stories. Students, capitalize the first letter of today and I and put a full stop at the end of this sentence. Number 8. The Chen family is having a good time. Students, capitalize the first letter of the and Chen and put a full stop at the end of this sentence. Students, do practice this question properly. Dear students, for further explanation, you can watch comprehensive explanation of these topics on our official Millat YouTube channel, English Comprehension Class 2, Lecture number 15 plus 19. Students, now come to the next subject. Maths, book page number 46, Part F, G, classwork, H, I, J, homework. Table of 3, learn. Students, open your books at page number 46. Let's solve the question number G. Step 1. Subtract ones. Dear students, digit 1 is less than to digit 6. That's why we can't subtract digit 6 from digit 1. So firstly, we will take digit 1 from tens as borrow. And the digit 9 will convert into digit 8. Students, when we do not have sufficient 1, we convert tens into ones. This process is called borrowing. Got it, students? Okay. Now, we will subtract ones. 11 minus 6 is equal to 5 ones. Write digit 5 as answer of ones. Step 2. Subtract tens. 8 minus 3 is equal to 5 tens. Write digit 5 as answer of tens. The complete answer is 55. Hence, 91 minus 36 is equal to 55. Dear students, for further explanation, you can take help from example number 11 from your book at page number 42. Students, you will do practice rest of the questions by self and do the homework part H, I and J. Students, you will also learn the table of 3 today. आइए अब अगले मजमून की जानिब बढ़ते हैं. मुआशरती अलूम, बाब पंजम, सवाल नंबर 1, क्लास वर्क इज होमवर्क प्लस लर्न. आइए बच्चों, किताब के सफ़ा नंबर 21 से सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं. सवाल, लोग सूती कपड़े कब पहनना पसंद करते हैं? जवाब, मौसम गर्मा में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं. सब बच्चे इस सवाल को जुबानी याद करने के बाद कॉपी पर घर का काम भी करेंगे. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द साइंस सब्जेक्ट. चैप्टर 3, इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोजा, स्पॉन्जेस, concept development plus scientific term.
Students, open your books at page number 17. Here is the topic of invertebrates. Dear students, like vertebrates, invertebrates are also classified into following kinds. Protozoa. These are unicellular animal-like organisms. They move and prey other unicellular organisms. Students, you can see the picture of amoeba, Paramecium euglena in this page. Now come to the sponges. They are multicellular organisms. They have porous body. Water can easily pass through the body of these animals. Students, you can see the picture of sponge and siphon here. Dear students, here is a pink block. It tells us about porous. Porous means having small holes in the body. Students, read these topics at least thrice to understand these concepts and improve your reading part. Now let's mark the scientific terms just for general knowledge. Protozoa, prey, organisms, sponges. आइए बच्चों, अब शख्सियत साजी के मजमून की जानिब बढ़ते हैं. शख्सियत साजी, कहानी शेर और लोमड़ी, अखलाकी सबक प्लस मुश्किल अल्फाज. आइए बच्चों, किताब के सफ़ा नंबर 10 से कहानी का अखलाकी सबक और मुश्किल अल्फाज पढ़ते हैं. अखलाकी सबक. अब पछताए क्या होवर जब चिड़िया चुग गई खेत. मतलब ये कि जब आपकी गलती अंजाम को पहुंच जाए तो तब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तब नुकसान की भरपाई मुमकिन नहीं होती. आइए बच्चों, अब मुश्किल अल्फाज पढ़ते हैं. बेताब, बेचैन और परेशान. सब बच्चे कहानी के अखलाकी सबक को ज़ुबानी लिखने की मशक करेंगे और मुश्किल अल्फाज को ज़ुबानी याद करेंगे. आइए बच्चों, अब नाजरा कुरान की जानिब बढ़ते हैं. नाजरा कुरान तख्ती नंबर 16. सब बच्चे आज अपनी वालदा या कारी साहब से नूरानी पारा की तख्ती नंबर 16 की मशक करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, today's diary task is completed now. Do practice it under the supervision of your mothers. Take care of yourself. Allah Hafiz.